Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Varun. Good morning, Nilesh. Keep your charts clean, guys. We will start the screening in 2 minutes. Hope everyone's weekend went well. Keep the charts clean. We'll start in 1 minute. Hit the like button, guys. So let's start with BTC. Daily time frame पे आ जाइए. Right? What are the major things you guys have to notice at the current state? At the current state, you guys have to be focused. Let's start the screening from BTC. What does BTC is currently saying you? Right, this was your overall POI range point of action. With this point of action, market had completed the zone and उसी point of action से market rejection ले लिया, correct? What is the next thing that you will be working on? Post this, we allocate it from the inducement range. ये हमारा inducement range था. उस inducement range के साथ market had completed the movement. We will mark out the range. Post marking out the range, we had got one of the mathematical point of actions जहाँ से market ने reverse ली थी, right? Reverse लेने के बाद what did the price action build? Price action was built through an internal liquidity point, right? Let's mark out the internal liquidity point over here. With this point of action, जितना हमारा demand generation यहाँ पे हुआ था, जितना हमारा जनरेशन ऑफ डिमांड यहाँ पे हुई थी उतना ही मार्केट कंटिन्यूड विथ S2 सिनेरियो, right? Post the closure of this, did the market close the body below the levels? No, the market didn't close the body below the levels. So इस point of action से what is the second step of daily movement that we'll be looking for? जितना हमारा बॉडी जनरेशन यहाँ पे हुआ है उतना ही मूवमेंट ऑफ अलोकेशन आपको दिखने को मिलेगी ऑन द कंटिन्यूटी पोस्ट रिट्रेसमेंट, right? जो कि in this scenario, this is the current movement of action that we'll be looking at. कहाँ तक आ सकती है market का first price actional point? The first price actional point will be at 87,091. Only only one confirmation we need at this point of action, that is the mathematical number rejection points. अगर rejection points match होती है, definitely market will come down to the range till the point of action of MC2. ओके, सो इस पॉइंट ऑफ एक्शन में हमारा डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस हो गया. व्हाट इज वेव एट द करंट स्टेज? वेव एट द करंट स्टेज इज बुलिश. The next step of action that we'll be looking at is in 4 hours. What is 4 hours indicating for us?
इस point of action में, right? Did the market follow the inducement part range of each and every point over here? So this was our first supply. This was our first supply in the action. With the first supply, did the market completed the second round of it? Yes, definitely it completed the second round of it. Right, post completion of it, did we see a retracement coming over here? Yes, we did see the retracement coming over here. Retracement market कितना लेता है? Previous जितना demand था यहाँ पे उतना supply जो यहाँ पे build हुई है, that will work as a current demand of retracement. Right? जैसे ही हम ये point of allocation को mark करते हैं, what is the next thing that we'll be looking at? The next thing we'll be looking at allocating the mathematical numbers, right? Mathematical numbers ka directions, let's identify what are the swing low, swing high, and what is the retracement point. Swing low to hamare paas hai, swing high kahan pe hai? This is our swing high and this is our retracement point, right? Let's do the math. For bullish scenario of the 4 hours, let's take the swing high as 84,480 minus 76,669.38. What is the formulative number that you guys get? The formulative number is 7,810. Once we get a 7,810 formulative number, what is the next thing that you guys will be working on? We'll be working on the point of interest of the retracement point. यहाँ पे retracement point कितना है? Retracement point is at 80,002.34, right? So with that number, you will add the formulative number into 1.618. Your target is 92,639.92. Intermediate ratio target is 95,623.58. These are the levels that you will be allocating for a 4 hour. Swing traders के लिए ये level allocate होगी. So let's mark out the levels over here. What is the golden ratio? 92,639.92. This is our golden ratio for the 4 hour time frame. With this point of action, let's mark out the intermediate ratio 95623.58, जो कि हमारा internal liquidity point था. वही point of action will be considered at the current stage of action. जैसे ही ये levels of allocation mark होती है, what are the next steps that we'll be working on? The next steps we'll be working on is in 1 hour. What did we notice in 1 hour? Saturday के दिन क्या किया था market इस point of action में? Right? Did it follow all the steps that what we wanted? Yes, it did follow. Right? जो कि हमें drop चाहिए था, क्या market ने वो drop दिया? Yes, but not fully. But यहाँ पे अगर notice कर रहे हो, we do have a POI range from this point of action to this point of action. This is not a sideways, this is a POI range. Why this is a POI range? In this point of action, अगर तुम high point को mark करो and ये आपका low point को mark करो, did the market tend to move at all the resistance to support, support to resistance? No. When the market didn't move in that direction, what is the next step that market will tend to do? Market will tend to come down and look for an inducement generation. यहाँ पे वॉल्यूम allocations होती है, इस point of actions में iceberg generate होता है. With that point of action, what are the major things you have to be looking here? Inducements. Do we have an inducement generated at this point of action? Yes, we do have an inducement generation at this point of action. What are they? Partner 1, partner 2, break, rejection, continue. Right? Is point of action में कौन सा scenario generate हुआ था? The scenario which got generated over here is bearish scenario 2. Right? Because on the same candle, rejection and the continue was done. With this plan of action, what are the next steps that we'll be allocating? The next steps we'll be allocating is the
supply and demand range, right? With this plan of actions, what are the two major things that we'll be allocating at this stage? As per the nearest point of action, we will allocate the levels. This was our first supply. With this supply, market completed the second. रिजेक्शन कितना लिया था? जितना हमारा फर्स्ट सप्लाई फर्स्ट डिमांड यहाँ पे जनरेट हुआ था, उतना ही रिजेक्शन कंटिन्यूटी में मार्केट ने दी थी. Post rejection, what did market tend to do? Market took a proper supply of concurrents and created the ratio. Continuity में market ने point of action build किया था, so we will allocate the same. 150% हमारा first target होता है, यहाँ पे 150% complete होके directly 200% हुई थी. So no marking required for the current plan of action of 150. Right? So जैसे ही ये हमारा markout हुआ, what are the next steps that we'll be looking here? The next steps we'll be looking here to the allocations कहाँ तक market नीचे के लिए आ सकती है, right? So let's considering at the point of action of this as a swing high, this as a swing low. Sorry, उससे पहले एक point है. This as the swing low and this as a retracement point. Right? Let's do the math on the bearish scenario and check whether this numbers got their targets or yet we need to find the targets. Okay, the swing high is 85,292.81. What is the swing low? 83,750.53. What is the formulative number after subtraction? 1,542.28. Right, with this plan of action, what is the retracement point we have? The retracement point we are having is 84,713.11. Right, so the what will be the calculations over here? Retracement point 84713.11 minus 1542.28 into 1.618, जो कि हमारा टारगेट आके 82,217 आती है गोल्डन रेशियो की. 82,217. Did the market work at this current? Did the market take an executions of the reversal from the same point of actions? Let's look into the circumstances. 82,217.70. Where did market take the rejection from? From the same point of action of the mathematical numbers. Post this mathematical numbers, what are the next step that we'll be looking at? Will the market continue in the bearish directions or the bullish directions? How will you identify that? You will identify that through the allocations of the supply and demand and market कहाँ तक आएगा वहां तक की movement allocations हम देख के चलेंगे. Okay, so this is 1 hour. So post 1 hour completions, we will come down to 30 minutes to look into the circumstances. What did the market do and what will be the next plan of actions that you will be looking over here. Okay. So at this current stage, जितना हमारा previous demand था 1 hour का, क्या वो complete हुआ market में? Yes, this was the first plan of action. With this plan of action, this is the second plan of action. The market had completed the range and there was a POI break and continue. Coming down to 30 minutes, what is market indicating us at the current stage of action? Right, market is indicating a movement which has been in the directions of the bullish. So इस point of action में आप क्या देख सकते हो? रिवर्सल कितना ले रहा है मार्केट? जितना हमारा डिमांड में सप्लाई जनरेट हुआ था उतना ही प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पे बुलिश से डिमांड क्रिएट होते हुए दिखी है. राइट, इस प्लान ऑफ एक्शन के साथ नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ अलोकेशंस होगा हमारा. Okay, post this, what are the next steps that we'll be working on? The next steps we'll be working on is in 15 minutes allocating the nearest reversal points. Right, sorry, to allocate the nearest reversal points, how do we look into the circumstances? This will be your swing low, this will be your swing high, and this will be your retracement point. What is market doing? Let's allocate the bearish scenario over here. Sorry, bullish scenario over here. Swing high is at 82,646.55.
Let's be precise. Okay. So what are the numbers looking like? 82,634.17. What is the swing low? 81,978.86. What is the formulated number? 655.31. With this, what is the retracement value that we are having? 82,504.28. And what is the calculations that we'll be working on? The calculations we'll be working on is 82,504.28 plus 655.31 into 1.618. The number is 83,564. 83,564.57. Right? Suppose this number is allocated, what is market doing? Yes, definitely market is trying to take the rejection from the same point of action. अगर ये miss out होता है, where could the next reversal area could be of the market? Let's allocate the next plan of actions that is at the current stage of 83,814.9. Okay, these are the two major places where the market could tend to take the liquidity and come down to a plan of action to hunt down the एक्सेल मोमेंट एक्सेल मोमेंट जनरेट हो रहा है यहाँ पे यस डेफिनेटली जनरेट हो रही है इन दिस प्लान ऑफ एक्शन okay so with that plan of action we will look for a next executing points so abhi यहाँ पे what are the major scenarios that you will be looking at 1 hour में अगर threshold build होता है then we will look for अगर 1 hour में threshold build होती है like this we'll look for long if like this we will look for short. Okay, and one thing in 15 minutes, what are the major scenarios? Inducement follow karo. With the inducement following, look for S2 scenarios. Is the wick created, second candle completed in the same direction, and third candle continuity? S2 second scenario में अगर notice करना है, let the market create an insider candle, third candle closure below continuity. Okay, these are the major plan of actions that will be looking in BTC and following through. कोई doubt है इसमें? Any doubts in BTC, guys? Great. Okay, so post this, let's come down to gold, starting with daily time frame. What are the current plan of actions that we'll be looking at in gold? Gold is at all-time high. What is the next thing that we'll be allocating? We'll be allocating the major bias slot, which was here. Post that, we'll be allocating the second slot of action. Right before allocating the second slot of action, let's do the supply and demand postings. जैसे ही हमने यहाँ पे डिमांड देखे थे, what did the first plan of actions looks like? The first plan of action will be multiplying it post the retracement level. The market continued with the same plan of action. Then the market from the 150% range, the market took the rejection point.
right? Then what was the retracement point over here built as per the inducement level? That is the retracements that we'll be looking over here in allocations of the movement. So जितना हमारा previous of allocation point था उतना ही movement यहाँ पे generate होते हुए दिखी. What is the next steps that we'll be looking at? What was our first supply point? That this was the first supply point where we are looking in the circumstances of the movement. Post that, what is the retracement that we'll be looking for? जितना हमारा demand में first range of action का supply build हुआ था उतना ही conversion में you will be looking towards the demand generation in the bullish side. So do we have a bullish retracement point as per the requirements of the previous supply? Yes, we do. What are the next steps that we'll be working on? First plan of action, जितना हमारा previous supply था उतना previous allocations हम यहाँ पे डालेंगे. Market definitely continued with the plan of actions. So what is the next step? Multiply the version. Post multiply the version, what is the next thing that we'll be allocating over here? The next thing we'll be allocating is 150% range, right? इस point of action में ये हमारा 150% का range था. So this will be the allocation point. अगर market ये break करके sustain करती है, then market will go down till the 200% completion of the daily candle, right? So इस plan of action होने के बाद what are the next steps that we'll be working over here? We'll come down to 4 hours. In 4 hours, what are the major things that we'll be focusing over here? What are the major things that we'll be focusing over here in 4 hours? Let's leave this point of action. We all know this point of action is already being done. Let's allocate from the demand range. This was the first demand allocation point. With this demand allocation point, let's allocate the supply conversion demand. इसके साथ, where did the market started the reversal point? The market started the reversal point from the mathematical number and the completion of the demand. So this will be your major markout of the current allocation point. जैसे ही ये markout allocate होता है, what are the next steps that we'll be working on? Let's look into the mathematical numbers. This point of action done, this point of action done, this point of action done. Where is the next inducement generated? The next inducement generation is at 2880.947, right? Do the mathematical edge 1.0, right? In the bullish scenario of the current state, the number reversal value is of 2880.490, right? So square root of that is square root of 2880.49 is 53.6701 9657. उसके बाद we will raise the components by adding 0.375, जो कि हमारा वैल्यू निकल के आएगी 54.0451967, right? Then we'll raise the exponent by 2, and the value of reversal point what we'll be getting is 2920.883, right? 2920.883 का target hit हो चुकी है. What is the next exponential value that we'll be looking at? We'll be looking for a next exponential value from the square root point of view. We will raise the value by 0.5, which is 54.17019657. What is the target we are getting? 2934. Did the market take a plan of action? Yes, definitely the market took a plan of action and completed the range. What is the next reversal area formula that we'll be looking at? The square root of 2880.49 as 53.67019657. Addition of value 0.618 is of 54.2881967, right? The value exponent raised to 2947, target hit ho chuki hai, right? Post that, where is the next inducement range that we are getting? The next inducement range we are getting over here, which is at 2906, right? So let's raise
the mathematical edge inducement value to 2906.276, right? What are the next steps that we'll be looking over here? Same formula of square root. What are the numbers that we are getting? The numbers we are getting at 53,909,88,778. Value of 0.375 is 54.28488,778. Once we get that number, when we raise the exponent by 2, we will be getting a value of 2946.849. Target is hit. Post that, what are the next steps that we'll be looking at? Same value of rising from 0.5, the target is hit at 2960, right? The same value raised from the value of 0.618, the target was 2973.29, the target was hit. So his point of actions, what are the next things that we'll be looking at? The current range, we don't have inducements, but if we come down to 1 hour, do we have an inducement over here? So this will be the next inducement point which we'll be looking at, which is 2932, right? With the 2932.760, 2932.760, what are the values that we'll be looking? The values that we'll be looking at currently, by square rooting 54.219, by adding 0.375, the exponent raised by 2 of 54,59455 is currently standing at 2980.565. Target hit ho chuki hai. Same square root formula raised by 0.5, the value comes down to 2471,955. When we raise that value by 2, component of 2, the target is at 2994.233, जो कि वो वाला टारगेट भी यहाँ पे हिट हो चुका है, right? Post that plan of action. Last square root formula that we'll be raising at the current state of action is of 0.618, जो कि वैल्यू निकल के आती है 54.8375367, जो कि टारगेट आके 3007.157 की है, जो कि यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशंस शॉर्ट के तरफ हमने फ्राइडे के दिन किए थे, right? The completion of allocation of mathematical number 1 is done, right? Edge of 1 is allocated. Then let's look into the circumstances of 2.0. At the 2.0, what are the major things that we'll be allocating at the stage? The 2.0 major allocation points will be looked into two circumstances. The two circumstances will be allocated as per the numbers from the calculation point. Your swing low will be 2880.196. Your swing high will be 2922.193. Your retracement point will be acting as 2906.313. Right at this point of action, what is the first thing that you look into bullish scenario? Swing high 2922.193. What is the swing low? 2880.745. What is the formulative number that you get once you subtract? The formulative number you get is 41.448. Post you get the formulative number. Retracement point 2933.07 plus 41.448 into 1.618. What is the number that we are getting? Exactly where the market took the rejection from. Right, and what is the intermediate number that we are currently looking at? The intermediate level that we are looking over here is at the state of 3015.966. ये हमारा value of allocations होगा 1 hour के हिसाब से. And when we will be looking for this point of action, this point of actions will be looked only with the inducements, not prior to that. Clear? So at this point of actions, let's allocate the moment through the mathematical ho gaya. Let's allocate with the supply and demand.
right? This was the first supply of allocations. Post supply of allocations, market had completed the movement. जितना हमारा फर्स्ट सप्लाई यहाँ पे बिल्ड हुआ था उतना ही मूवमेंट ऑफ अलोकेशन इस पॉइंट ऑफ एक्शन से आपको दिखने को मिली थी. Post this point of actions, the market had completed the range. What are the next step? Retracement कितना लिया था? जितना हमारा inducement range में था उतना ही यहाँ पे दिखने को मिली थी. Post this point of action, what are the steps that we'll be working on? The next steps we'll be working on to the expansion of the movement. Right, on the expansion of the movement, what are the steps that we'll be currently looking? जितना retracement point से movement create हुई थी, that will be your TP1 acting, which you will be seeing over here. Post completion of that, multiplied version of this will be acting as next part of action. Right, इस point of action में 50% से rejection लिया था, continuity, this was our first supply. Post first supply continuation, what do we notice? We notice a movement which has been taking rejection from the 200% of the completion. Post 200% of the completion, what did market do? Market went up to allocate the liquidity point of action. If you notice, इस point of action में market ने क्या किया था? इस point of action में market had moved and given partner 1, partner 2, partner 3, partner 4. Break, continued, took the liquidity of all the people who had sat on the higher high patterns at all-time high. Same inducement to follow करके bearish scenario का market had come down at this range, right? With this following, market is currently in a zone of Asian session. Post Asian session completion, you will see a market movement in the directions which will be allocating through the inducement point. Okay, so these are the current scenarios that we'll be working on, and these are the current scenarios that will be working out in gold. Coming down to the allocation point of 15 minutes, what are the major things that we'll be working on? The major things over here we'll be working out are on the major reactions of liquidities and retailers fund. Stops कहाँ पे है? उस stops को identify करेंगे through the mathematical numbers. Through the mathematical numbers, we'll be allocating the next plan of actions in the direction. Right? So what are the first steps that we'll be looking over here? The first steps we'll be looking over here is the mathematical numbers that we'll be allocating at the stage point. Post that, we will be looking for a next step of actions. So I'm just allocating these levels properly. Okay. Post this plan of action is done, what are the next steps that we'll be looking at? Friday के दिन हमारा एक plan of action execution में था, which was acting as this as a swing high, this as the swing low, and this as our retracement point. Right, post this allocation points, what are the scenarios that we'll be working over here for a bearish movement? For a bearish movement, we'll be looking for an allocation of swing high, which is 3005.351 minus 2986.451. The formulative number is 18.9. What is the retracement point that we are getting? The retracement point we are getting exactly is at 3000. Right, with that 3000, what are the numbers that we will be looking at? 3000 minus 18.9 into 1.618, that is 2969.419, and the intermediate ratio is 2962.2. So at this stage, what are the major things that we'll be working over here? The major things we'll be working over here is for an inducement. अगर inducement build होती है, continuity on the trade towards the short. Okay, so the numbers of the math is allocated in the screen so that you can look into the perspectives of the same.
These are the formulative numbers that what we'll be working on in today's scenario in the morning session. Okay, if you want to allocate kitna movement kahan se kyun aa rahi hai at this positional point, what is the major things that we will be looking over here? The previous supply zone. What is the previous supply zone? This is the previous supply zone. Let's allocate the same previous supply zone at this point of action. What are the major things that we'll be looking at? Right, same rejection point from the action. Post that, market had took a rejection point from 150%. Right, so this is the major allocation of 150% what you can look, and market is following through. And market में reversal point आएगा, उस point of action से we will look for the next step of action. Okay, so this is clarity version of holding the trades till the next point, which is at the scenarios. Okay guys, let's move to Indian sessions. Koi doubt in gold? Good morning, Vishal. Just to clarify, as per Friday, we are still waiting for a liquidity grab from the lower side. Along with there is a volume breakout in 1 hour, and wick shows selling pressure. Yes, definitely. The plan of action is still the same, because without the actual movement, the market won't move. Right? 1:10 का ratio जो है हमारा, right? Post the 1:10 ratio, the market won't tend to move in the directions, right? That is at this point of action. We need this actual recovery. Post actual recovery only, we will be looking for the next plan of actions, not prior to that. Okay, guys. Hit the like button, guys. Good morning, Ambika. एक सेकेंड लोड हो रही है इंडियन सेशंस. किसी को भी कोई भी डाउट है, डू आस्क. नितेश, इंडियन सेशंस का टारगेट हिट हो गया. आई नो दैट मैम. बैंक निफ्टी का भी हो गया, निफ्टी का भी हो गया. थैंक यू फॉर द ट्रेड, नो वरीज.
सो जो हमारा फ्राइडे के दिन की प्लान ऑफ एक्शन था, इस पॉइंट ऑफ एक्शन में वही प्लान ऑफ एक्शन के साथ मूवमेंट अलोकेट हुई थी, उसके साथ ही यहाँ पे टारगेट बैंक निफ्टी हिट हो चुकी है। निफ्टी अभी तक हिट नहीं हुई है। वी स्टिल नीड 30 पॉइंट्स प्लस वी स्टिल नीड another 100 points for coverance of intermediate ratios, right? So these are the plan of actions that we are looking at the current stage of action. With this current plan of actions, what are the next steps we'll be allocating? The next steps we'll be allocating is the supply and demand. Kab, on the closure of 10 o'clock candle, we will look for the circumstances and allocate the trades. Right? Be in the directions of the math will automatically allocate you the right price of actions. Right? अभी के लिए मैं हटा रहा हूँ, इसमें भी हटा रहा हूँ, so that we can get a new levels and we will allocate in the same directions. At the current state of actions, what are the first plan of action we'll be looking at? बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमारा टारगेट हिट हो चुकी है. So what are the major steps that we'll be working on? The major steps we'll be working over here are as this swing high, swing low, and the retracement point target hit होने के बाद, what are the next steps that we'll be working out over here? There was a AMD setup. Post AMD setup, whatever the first allocation point, that will be your next plan of actions. So in this scenario, this is my swing low, this is my swing high, this is my retracement point. Right? Post this retracement point, what are the major things that we'll be working over here? The major thing we'll be working over here are on the allocations of the bullish scenarios. What is swing high? 48087.75 minus swing low. What is 47842.50? What is the formulative number? 245.25. What is the retracement value that we are getting? Retracement value that we are getting is 47979.40, right? Is equal to 47979.4 plus 245.25 into 1.618. The number comes down to 48376.21, right? The first line of action we have got, the market is taking the rejection from the same point of action. Let's allocate the intermediate levels. So where are the intermediate levels that we are looking over here? The intermediate levels are standing as per the requirements 48469.19, right? They are the next, sorry, 48, गलत हो गया, 48469.28. Numbers are not changing only. 69. Okay. So these are the plan of actions that we'll be currently looking at and the reversal point of actions through the same. How do we look into the circumstances? कितना movement आएगा, कितना retracement आएगा, जितना हमारा previous allocation points completion दिखती है, come down to 5 minutes. Through 5 minutes उतना ही movement of action आपको allocate करके चलना होगा. This was our first supply point of action. With the first supply point of action, what is the next steps that we'll be looking at? The next steps we'll be looking at the allocations, retracement कितना लिया है market ने, जितना demand generation उतना ही continuity में यहाँ पे हमें plan of actions दिखने को मिले हैं. That plan of actions, what is the next step that we'll be looking? जितना हमारा first supply allocate हुआ है उतना ही movement यहाँ पे फिर से continuity में. Okay, so this is the plan of action for Bank Nifty that we'll be looking at the current stage of actions. Post this, what is the next steps that we'll be working on? The next step we'll be working on is on Nifty 50. In Nifty 50, हमारा major point of action in 15 minutes lowest point is this.
With this, point of action retracement is over here. With this, the moment of allocation is over here, right? So let's allocate the numbers. 22,445 is your swing high. 22,445 as your swing high. Swing low is at 22,335.35, right? Post that, what is the formulative number? 109.65. With 10.65, what is the next steps that we'll be looking at the current stage? The next step will be looking for a retracement point. 22,390.95 plus 109.65 into 1.618. What is the value that we are getting? 22,468. 22,468 value is allocated post completion 22,510, जो कि हमारा target यहाँ पे hit हो चुकी है. What is the next plan of actions that will be working over here? The next plan of actions that will be working is by moving the point of action. Right, post completion, let's move the swing high and retracement point. The value of the current state remains at the same constant level, right? Swing high change okay, 22,476.80. Swing low आके 22 335.35. Okay, what is the formulative number? 141.45. Post 141.45, what are the next steps that we'll be looking at? Retracement point 22,433.90, right? Post that is equal to 22,433.9 plus 141.45 into 1.618. What are the formulatives number that we are currently looking at? The formulative numbers we are looking at is in the range 2266.2.75. This is the numbers that we'll be looking at the current stage of actions as the golden ratio. Agar golden ratio change hoti hai, then we will be allocating the next plan of action. Right? These are the formulative numbers that I will be allocating. Just for a showcase, I'm just putting across in the values. Okay, guys. Indian sessions कोई भी doubt है, please do ask. शॉर्ट के लिए एट द करंट स्टेज ऑफ एक्शन वी डोंट हैव द allocation. जितना हमारा प्रीवियस यहाँ पे था उसका हो चुकी है. On the continuity we'll be looking for the next, not prior to that. Okay, तब तक के लिए शांति, पेशेंसफुली बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, लाइव टेस्ट करो. Allocate the trade in the directions of the market, not against to the markets. Okay, guys, am I clear? कोई भी डाउट है पूछो. Keep back testing, keep allocating the trades in the directions not prior to that. Hit the like button, guys.
Keep doing the back testing. Welcome to the stream. I'm confusing over multiple time frame calculations. We execute the trade in 15 minutes. So that are the levels that you will be focusing on. Why are you getting confused? The allocations we are allocating in the higher time frames. The allocations that we are doing the calculations in the higher time frames is just to make sure if there is a big movement, where will the market tend to take the rejection from? So because of that point of actions, we are allocating the directions in the movement. Okay. We execute the trades in 15 minutes. The levels will be marked in the range of 1 hour and 4 hours. That is mandate, right? Suppose the level is marking, work on the 15 minutes and 1 hour levels, right? Post allocations of 1 hour levels, execute the trades in 15 minutes and hold on till the directions. Okay, Vansh. Without doing the screening, you won't be able to identify which side you will be going to execute the trades. There is no shortcuts. Give yourself 22 days, right? So that your subconscious mind and mind gets fixed to the calculation perspective. Post the calculation perspective, execute the trades in the calculating perspective of 1 hour and 15 minutes. Okay. Definitely. You're learning it in the new way, so it will get confused in startings. Right? Post you have done, you don't have to get confused because you know, okay, 1.618 is first. If that breaks and continues, then the target will be till the next, which is of intermediate. If the level is not break the golden ratio, why will you hold the target till the intermediate ratio? Got my point? Good morning, Arundhati ma'am.
Got it. Thank you. Any doubts you guys are having, please do ask.
बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग में करते हुए कोई भी डाउट आता है पूछिए. राइट डाउन इन a book. Post that you do ask. So we'll clear it to you. Post clearance, you can look for the next executions. Good morning, Samath. निफ्टी होल्ड कर लो क्या? यस, होल्ड कर सकते हो देखो. स्विंग में लेके चलो उसे. फॉरवर्ड टेस्टिंग करने के लिए गो चार्ट यूज करो. राइट, इट्स फ्री. बैक टेस्टिंग, लाइव टेस्टिंग के लिए ट्रेडिंग व्यू. जो भी लोग किसी में भी ट्रेड कर रहे हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अ पर्सन हु इज ट्रेडिंग इन इंडियन सेशन, pick one equity, do the back testing for 1 year, then come to futures, do a back testing of 1 year, then come to options, do a back testing of 1 year. Post completion of this, come down to forward testing. Forward testing equities will be 6 months, forward testing for futures will be 6 months, forward testing for indices will be of 8 months. Post completion of this, come down to live testing. In live testing, 1 month, observe, allocate the levels, then execute the trade from the smallest positions. Once you get 90% surety and confidence in execution, then execute with the real value that you're looking to invest.
Okay. This is the plan of actions that you guys will be working in Indian sessions. Gold के लिए back testing is 1.5 years, forward testing is 1 year, live execution 1 month. Then come down with a small portion of actions to execute the trade with that point of actions. You can start with a smaller quantity as 0.01, then execute with the real value. BTC 2 years of back testing, 1.5 years of forward testing, live testing of 1 month, then small position sizing. Post you get a confirmation and confidence, then you will be looking for the next, not prior to that. Good morning, Sagar. बैक टेस्टिंग करते वक्त, फॉरवर्ड टेस्टिंग करते वक्त जो भी डाउट्स आता है, प्लीज डू आस्क. Hit the like button. All the new members, if you're liking the video, if you're learning from the streaming, do it a like, share, and subscribe. धीरे से आए, तेजी से आए, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आना चाहिए. जब तक वो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, तब तक मार्केट में जान है. एक बार समझ लेना, सर्कुलेटिंग सप्लाई ले लिया, एक्सेल थियरी कंप्लीट होती है, डायरेक्टली मार्केट यहां से रॉकेट बनेगा, रॉकेट. Thank you for yesterday's video, that helped a lot. You're welcome. Keep learning and keep growing, Nilesh. So now, Nilesh, you're able to identify the scenario 2, which is S2 and S1 easily, right? Yes. Great.
in BTC making bearish scenario too. Yes, that's right. Scenario 2 create करना है. S2 B2. Exactly, market is taking rejection from the mathematical number. Rinku Goel is none other than Anirudh Goel, right? If I'm not wrong. Now the thing is, in back testing and forward testing, I am also trying to recognize the different scenarios along with supply and demand allocation in different time frames. Yes, that's right, Nilesh. You have to do it. Right? So for not confusing much, you can just look in for two time frames, which is 15 and 1 hour. Because you're not working as a swing trader as of now, right? So you can look into the perspective of 1 hour and 15 minutes. Okay, sir, got it. The day you will get converted into a swing trader is the day you have to get into the 4 hours time frame. Okay. So currently back test and forward test, you can look into the perspective of 1 hour and 15 minutes, right? Once you get in hold of it, then you can come down into the circumstances of 4 hours while you start executing the trades, right? So in that circumstances, it will be easier for you to grab 4 hours. Sure. Sir, can we apply this in any of the markets? Yes, you can apply it in any of the markets. Mr. Hitman. नितेश वरुण बहुत शांत है. रहने दो मैम, शांत रहने दो.
वो चुपचाप ट्रेड कर रहा था स्मिता मैम. 80 pips running in good.
Good morning, Tosif. Good morning, Tosif. अलर्ट लगा लेना प्लान ऑफ एक्शंस में. All day is the lookout. All the new members, welcome to the stream. If you're learning from the stream, if you're liking the content, do hit a like, share, and subscribe. I'm getting doubts about MC concept. I'm getting confused in from where to find the swing high and low. At this scenario, तो सिर्फ simple example. यहाँ से rejection लिया. This was the swing high. This was the retracement point. This will be your swing low. Calculate this number. अगर ये टारगेट हिट हो गई यहाँ पे, जो कि अभी हुआ है, अगर ब्रेक होके सस्टेन होके कंटिन्यूटी में आती है, then your swing low, swing high, retracement point, right? That is the way of looking out. At this current stage, what do we do? What do you notice over here? 1, 2, 3. Target hit. 1, 2, 3. Target hit. Right? Then the next point of action. 1, 2, 3. Target hit. That is the way of looking into the circumstances where exactly the market tends to take a rejection or a reversal from a point of action. Okay? Beautiful. London session to start in next 30 minutes, guys. Be ready. For gold, which ratios will be better, sir? You have to allocate golden ratio and intermediate ratio both. SKJ, welcome to the stream and welcome to the family. Hello, sir. I found your channel 3 days back. What you're doing is unique. I want to learn from the basic. Could you tell in what order I should watch the videos in the playlist or from where to start? First playlist will be of mathematical concept, right? So in this mathematical concept, the mathematical edge, if you're a gold trader, if you don't trade gold, then mathematical 2.0, mathematical edge 2.0, you can watch that video. Come down to supply and demand, complete the entire series of the playlist. Post that, you can come down to liquidity. Till here, you will gain
4% of what we do. Post that, come down in live, do the back testing, do the forward testing. Wherever you get the doubts, you can ask us. We will explain it to you in live itself. Okay? Okay, is KJ. Good morning, Mahesh. How are you doing? How was your weekend? Hit the like button, guys. Great, thank you. We'll do that. सर सबको करोड़पति बना के ही छोड़ोगे हम। शिद्दत से सीखेंगे तो खुद बन जाएंगे यार। Okay, Tosef, hope you got the point. Location should be in both the perspectives of golden ratio as well as intermediate ratio. Do we need to do structure mapping to find the MC before? Because if I am marking MC in wrong directions, it will be bad for me and I will be sitting in the wrong directions. What do you suggest? So at this perspective, the only one thing you can do is post screening, the allocation should be looked at, right? The allocation starts from daily time frame, then 4 hours, then 1 hour, then execution in 15. Because you will be knowing what side is the wave going, you will be knowing what side the tide 1 and tide 2 is going, and then you will be executing the trade in the directions of the market,
right? If you directly come down in 15 minutes, in 15 minutes you draw an MC level and you execute a trade, definitely you will take a hit. So make sure that you execute the trades in the directions of the market, not against the markets. BTC में एक शेल लेने आ रहा है 1:10 का. If any level is achieved and the market breaks the level, then how to confirm the sustainability so that we can change the swing high and swing low and mark the levels forward. Samarth, अगर market bullish directions में है, till the time there is no bearish scenario, there is no threshold, there is no S2 S1 confirmations, you won't be sitting in the opposite directions. You will just increase the SH, SL and SR. जैसे कि in the current scenario we had got an S2 generation over here of a B2, bearish B2 scenario. Post that the market is coming down in the range, right? So that's how you look into the structures. अगर इस point of action में mathematical concept break होती, then we could have moved the swing high. We couldn't just have looked into the perspective of a smaller range, right? So that's how you allocate it in the directions of the markets. Don't go opposite to the markets. Don't hurriedly execute the swing high, swing low retracement point to the next one post the break of golden ratio. Always wait. Patience is the key. Allocations in the directions of the math is the directions to make you money. Okay? As clear as that. Got the point, Samath? Beautiful, guys. Start the MTSL Asian session ka trade hai. MTSL will be, sorry, TSL will be at CTC plus 20 pips. With that perspective, the next plan of actions that we'll be looking at is in the structures of the MTSL. MTSL will be in looking structures of 20 pips only. No, I'm talking for bullish scenario only currently. Samar, same thing, right? If you're talking for bullish scenario, if the market could have break 83,815, then only next plan of action will be taken under the consideration, right? Without that, how will you allocate the next swing high or the swing low? At the current scenario, if you notice, the market has taken a structure break, scenario create hua, inducement S2 build hui, market came down in the way, right? So at this point of action, why will you go to the next point of swing high, swing low and retracement points? That is my question to you. If definitely at the current stage, if we get an S1 or S2 generated, then we will be looking for the next plan of actions, not prior to that.
300 points में रख लो अंजलि. Sir, one more doubt. When to use golden ratio 1.618, when to use 1.809 and 2, sir. So 1.618 is the first plan of action of directions on the scenarios build of inducement. उस inducement point of action के साथ जैसे ही 1.618 target hit होती है, right, and it continues, then you can look for a scenario of 1.809 and then 2. Not prior to that. Samar, that's what I'm saying. No, right now, if it breaks, then only, and if one candle is closed above 83, 815, then only we will change allocations level, right? No, that's what I'm trying to say you, right? Just for an example, this was our mathematical number. We got the execution. From here, market tend to change, right? At this point of action, if at this stage, post the circulative supply is taken, then we will look for an S2 inducement, S3 inducement, right? At this point of action, once we get a direction of bullish, then we will change an allocation to the next point of action, not prior to that. That's what I'm trying to say you, right? If you wait till this break, post this break, if you allocate, that will be just 500 to 600 points that you will be getting. But our targets is of more than 1000 to 1500 points as a plan of action, right? So always you have to wait. Once you get an execution over here as an threshold or as an wick creation S2 perspective or S2 B2 creation inside candle 2 3 candles in the zone and the break, then post the break and continuity you can allocate the next mathematical swing and sit in the directions. Okay.
बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग करते वक्त कोई भी डाउट्स आता है प्लीज डू आस्क. All the new members, कोई भी डाउट है in regards to the markets, please do hit a comment so that I can help you out in understanding the markets in a better way.
Whatever doubts you're getting while backtesting, do ask. Definitely doubts आते रहेंगे, पूछना, right? Don't be shy or don't hesitate to ask doubts while you're learning. कुछ नया सिखाओ, पहले इसमें तो माहिर बनो, उसके बाद नए सिखाएंगे, नई चीज सिखाएंगे. इस पॉइंट ऑफ एक्शन में लिक्विडिटी
इस पॉइंट ऑफ एक्शन में इनसाइडर लिक्विडिटी ड्रॉ करो, मान लूंगी। ओके, can you identify a spinning top without a spinning top candle? Definitely. Everything is possible. क्या आप लोगों को बुलिश एंगल फिंग लग रहा है ना? ठीक है, ये हमारा वीक है। ओके, ये हमारा उसका कैंडल। ओके, इस कैंडल के अंदर, रुक जा भाई, हम डालेंगे बेरिश कैंडल। ओके, इस बेरिश कैंडल का जो अलोकेशन है ना, उसका छोटा करेंगे। ये थोड़ा मोटा हो गया। एक सेकेंड रुको। ये हो गया हमारा वीक। ये हो गई हमारी बुलिश बॉडी। ठीक, तो इसके साथ हम मार्क करेंगे बेरिश बॉडी। ओके, सो इस पॉइंट ऑफ एक्शन में हम लेके आएंगे यहाँ पे इस चीज को एंड इस चीज को। ठीक है, सो अगर सेम चीज मैं मेरा बेरिश कैंडल को छोटा कर दूं, व्हाट डू यू नोटिस? एक कैंडल सही नहीं बैठा। ये रुक जाओ, सही जगह पे ही नहीं बैठ रहा है। यस, सो क्या कहोगे इसको? राइट, let me mark out the box. 1, 2, 3, 4.
ओके, क्या पैटर्न बनाए, क्या कैंडल बनी? भाई साहब, यस, भाई साहब कैंडल। हर बार आपको बताता नहीं है मार्केट की मैं ये पैटर्न क्रिएट करके ही जाऊंगा। कभी कभी इंडिकेशंस इन द लिक्विडिटी देता है, राइट? विद दैट लिक्विडिटी द मार्केट मूवमेंट कम्स, नॉट डायरेक्टली। ओके, सो इवन हैमर्स कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू इट। एंड हमेशा एक चीज याद रखना, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है ना, एक पॉइंट ऑफ एक्शन में, हर एक पॉइंट ऑफ एक्शन में आपको प्रेशर दिखने को दिखेगी। जिस तरफ का प्रेशर आपको आइडेंटिफिकेशन करना आ गया ना, उस दिन आप लोग समझ लोगे कि मार्केट रिवर्स कैसे होती है, या ट्रेंड बेंड कैसा होता है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट how you can visualize it and how patiently you can observe the market. सेम सिनेरियो यहाँ पे रिवर्सल हुआ ना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ। बॉक्स ऑफ एंगल देख लो, ये हमारा विक रेंज है, ठीक है, ओवरऑल विक पॉइंट रख लिया, राइट? इसका बॉडी इतना ही है, ओके। उसका प्रीवियस वाला जो बॉडी है कितना है, इतना, राइट? अगर इसमें से हम इतना उड़ा दे, क्या होगी मार्केट? मार्केट विल टेंड टू क्रिएट एन एक्शन प्लान। क्यों एक्शन प्लान यहाँ पे बिल्ड होगा? नोटिस करो, मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ एक्शन में फर्स्ट प्रेशर क्यों आई? जितने भी लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, यहाँ पे फिबोनाची लेवल आया 0.3 एंड 5 का, ओके। जितने लोग आईसीटी यूज करते हैं, यहाँ पे उन लोगों को फेयर वैल्यू गैप आया, ओके। जितने लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, राइट, उन लोगों को सपोर्ट कन्वर्जन इनटू, सॉरी, रेजिस्टेंस कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट दिखी, राइट। जितने लोग पुल बैक का वेट करते हैं, उतने लोगों को यहाँ पे क्या दिखा? रेड कैंडल क्लोजर दिखी, करेक्ट। सो सेम ही वन थिंग, स्मार्ट मनी ने तो रूल्स फॉलो किया है यहाँ पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला भी तो रूल्स फॉलो किया है यहाँ पे, पुल बैक में बैठने वाला भी रूल्स फॉलो किया है यहाँ पे, राइट। बट मार्केट नीचे आई ही क्यों, राइट? अगर नोटिस करोगे, मेजर प्रेशर ऑफ अलोकेशन क्या था यहाँ पे? सेलर। नेक्स्ट कैंडल सेलर। दो मेजर प्रेशर यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग मार्केट विल डू टू यू? द नेक्स्ट थिंग मार्केट विल डू इज, first it will hunt out all the players who are following all the rules,
ओके, सब लोगों को यहाँ पे हंट किया। हंट करने के बाद सबका एसएल कहाँ पे है? इस स्विंग के लो पे, थोड़े लोगों का इस स्विंग के लो पे। जो स्विंग ट्रेड करते हैं उनका यहाँ पे होगा, जो इंट्राडे करते हैं उनका यहाँ पे होगा, जो स्कैल्प करते हैं इसी कैंडल के नीचे होगा। करेक्ट? तो इतना पॉइंट ऑफ एक्शन होने के बाद कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, प्रेशर दिखी आपको यहाँ पे? नो। बायर्स प्रेशर था? नहीं। मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट क्या किया? मार्केट ने इस पॉइंट ऑफ एक्शन में पहला बड़े लोगों का नंबर्स अलोकेट किए। राइट? नंबर अलोकेशन पॉइंट देख लो। Let's do the math over here. For an example, instant example, this will be my swing high, this will be my swing low, this will be my retracement point. Okay? So let's do the math of bearish. इस point of action में मेरा swing high आके 84,645.20 है. Right? मेरा swing low आके 83,446.77 है. मेरा फॉर्मुलेटिव नंबर आके 1198.43 निकली। राइट? उसके बाद मैं क्या करूंगा? रिट्रेसमेंट पॉइंट लूंगा 84,120.52 माइनस 1198.43 इंटू 1.618। राइट? मार्केट ने यहाँ पे क्या किया? मार्केट में यहाँ पे दो प्लान ऑफ एक्शंस क्रिएट किए। राइट? उस दो प्लान ऑफ एक्शंस के हिसाब से लेट मी रिमूव दिस पॉइंट ऑफ एक्शन एट द करेंट सिनेरियो। राइट? तो वैसे भी इसमें भी क्या भी बड़ी चेंज नहीं है। राइट? यहाँ पे जो 218 है ये चेंज होके आएगा 181, इसमें आएगा 81723। क्या मार्केट ने वहां तक रूल्स फॉलो किया? डेफिनेटली रूल्स फॉलो किया। इस रूल्स के साथ व्हाट डिड नेक्स्ट मार्केट डू एट दिस पॉइंट? इस पॉइंट ऑफ एक्शन में हर एक लोगों का प्रेशर जनरेट की। नो डाउट यहाँ पे विक जनरेट किया। राइट? यहाँ पे बॉडी ही नहीं थी। राइट? फिर से रिटेलर्स ट्रैप हुए यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा विक क्रिएट हुआ है, इतना बड़ा प्राइस एक्शन बिल्ड हुआ है। लेट्स एग्जीक्यूट द ट्रेड। ओके, उस पॉइंट ऑफ एक्शन देखने के लिए लेट्स कम डाउन टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ वॉल्यूम एज वेल। ओके, इस पॉइंट ऑफ एक्शन में आपको वॉल्यूम दिख के आ रही है? क्या आपको वॉल्यूम, ये जो विक क्रिएट हुआ है वहां पे दिख रही है? या वॉल्यूम आपको जहां पे मेजर प्रेशर बिल्ड होते हुए दिखा वहां पे दिख रही है? इस कैंडल में। राइट? जो कि ये वॉल्यूम है। अभी इस स्ट्रक्चर में मार्केट पहला क्या करेगा? जितने भी लोग यहाँ पे अलोकेशंस देखे हैं ना, उन लोगों का मैथ नंबर रहता है, जो कि 0.617 से लेके 0.619 तक अलोकेट होती है। द इंस्टीट्यूशनल फंडिंग्स, इनका पहला टारगेट देगा वो। राइट? Let's understand the circumstances in perspective of one of the major hedge funds. Right? उनका मैं वैल्यू लगाता हूँ यहाँ पे। Let's see what is the major reversal point of their value. Okay?
This is one of the biggest players numbers what I'm using right now, जो कि दिखाने वाला हूँ. उनका वैल्यू एलोकेशन देखते कितना बड़ा है. ओके, सिर्फ बेरी सिनेरियो का नंबर्स देखना, वो नंबर्स चेंज किया हूं मैंने. This is one of the biggest firms in the world who runs plays with this number. Okay, वो नंबर नहीं बताया हो यहाँ पे, but change of aggression देख लेना. Right, what is the plan of actions that indicating? Let's allocate randomly. Okay, मैं कहीं पे भी रख के एक नंबर डालता हूँ उनका 82182.65. 82182.65. Okay, so this is his first, that company's first number, first execution point. With this execution point, let's change the intermediate ratio also. Is there any very big difference that we are having? Right? उनका बाइंग प्रेशर कहाँ से शुरू हुआ? सेम पॉइंट ऑफ एक्शन, 1 2 3, ब्रेक सस्टेन नहीं हुई, 4. राइट, इस प्रकार से अलोकेशंस होती है. लेट मी पुट अक्रॉस वन मोर कंपनीज अलोकेटिंग पॉइंट जो कि मेजर है. ओके, so in this structure what is the next plan of actions that I will be looking at? उनका नंबर डालना है ना. ओके, उनको प्लान ऑफ एक्शन का ये नंबर आता है शॉर्ट ट्रेड का. So say me one thing, people who are executing the trades in the direction of an opposite mathematical numbers, definitely आप लोग हम लोगों को पैसे दे के जा रहे हो ना. 1 second ना. This is the values what a second firm uses. Okay, let's allocate a random number over here. What is that? Random number is 81940.57 as intermediate ratio. Okay, कहाँ पे है market? Let's allocate one more number of 82180.26. Where is the number? 180.2. So now understand this.
I am not used the same numbers. It's a different number, different criteria, different sectors, right? Different firms. Why everyone's number are coming into one play of action and ending at one point of action? And you guys say me that this is not how you trade, right? This is the random numbers of a companies which is working on the current scenarios which I have presented over here. Okay, कंपनीज का नाम नहीं ले सकता हूँ, नहीं तो वो भी ले लेता. Two major big firms, mathematical calculations I showed you. What is the difference? 100 points up and down is the difference. And you guys think support and resistance पे काम करोगे? It will hunt you down. Pullback में काम करोगे? It will hunt you down. Right? SL यहाँ पे रखोगे? It will definitely hunt you down. Okay, चलो swing trading है, लंबा चलता है, यहाँ पे रखते हैं SL. Right? That will also hunt you down because जहां से रिजेक्शन पर्सपेक्टिव आता है वहीं से ही मार्केट रिजेक्शन लेगा, उससे पहले नहीं. इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है. गुड मॉर्निंग अविरल. ये लॉन्ग ट्रेड में भी ना मेजर सिनेरियोस बताता हूँ. हाउ डू पीपल लुक इनटू द प्ले ऑफ एक्शन, राइट? एक चीज हमेशा याद रखना. व्हाट आर द कंफर्मेशंस दैट रिटेलर्स वांट? डब्ल्यू बनना चाहिए, राइट? सर वो डिमांड नहीं था सर, वो इनसाइडर लिक्विडिटी था, मैं डिमांड डाला ही नहीं हूँ बीटीसी में. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कंफर्मेशन व्हाट रिटेलर्स वांट. सेकंड कंफर्मेशन जो नया नया सीखे है, मार्केट ब्रेक हुआ, लेट द मार्केट कम इनटू द फेयर वैल्यू गैप. इन द फेयर वैल्यू गैप लेट्स लुक इनटू द प्राइस एक्शन. काम करता होगा, नॉट ऑल द टाइम. ओके, सेकंड कंफर्मेशन. थर्ड कंफर्मेशन क्या चाहिए? लेट द मार्केट हंट द लिक्विडिटी. ओके, 1 2 3. जितने भी लोग यहाँ पे बैठे इसके बाद जाएंगे. ओके, इस पॉइंट ऑफ एक्शंस में ये जो मूवमेंट है 17 से जो शुरू हुई है आज के दिन का, क्या प्राइस एक्शन आपको दिया है? 15 मिनट की कैंडल है, क्या प्राइस एक्शन आपको दिया है रिटेलर्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से? कुछ कुछ एक तो दिया होगा, राइट? ऑर्डर ब्लॉक दिया होगा. ऑर्डर ब्लॉक दिया है? नहीं दिया है. रिट्रेसमेंट हुआ है? नहीं हुआ है. फिबोनाची लेवल फॉलो करके गई है? नहीं गई है. डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया है? नहीं किया है. चलो यार, कोई एक तो शातिर होगा. चलो, लिक्विडिटी मिली है, क्लोज होने दो, इसके ऊपर क्लोज होने दो, इधर बैठेंगे. नॉट एवरी वन फॉलोज दैट एज अ रिटेलर्स एस्पेक्ट ऑल्सो, राइट? थोड़े लोग वहां पे बैठे, राइट, नो डाउट. उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? 1:1, राइट? वो एसएल कितना रखे? राइट, लेट मी पुट एन अलोकेशन पॉइंट. वो यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है, यहाँ पे बैठा है, राइट? दिस इज 1:1, नो?
In this 1:1 ratio, what is he winning? Okay, 1:2 रख लो. Okay, चलो 1:2 रख लो. यहाँ तक. हम्म. How will a person sustain in a market? जिनको मैथ्स पता है, जिनको इंड्यूसमेंट पता है, वो क्या करेंगे? ओके, जिनका रिस्क कम है, राइट, जिनके पास कैपिटल ज्यादा है, अलोकेशन यहाँ पे ही शुरू हो चुका है. ओके, जिनके पास कैपिटल कम है, रिस्क फॉलो करके चलना है, रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ चलना है. चलो यार, कैंडल क्लोज हुई, सेकंड कैंडल रिजेक्शन लेके चल रही है, जाने दो, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं थर्ड कैंडल पे रिजेक्शन के साथ. व्हाट इज द मैक्स टू मैक्स रिस्क? थर्ड कैंडल का है. न्यूयॉर्क सेशन के हिसाब से कितना होना चाहिए? लंदन सेशन के हिसाब से 40 पिप्स, सॉरी 400 पॉइंट्स. व्हाट इज द पॉइंट रेंज दैट यू आर सीइंग ओवर हियर? 400 पॉइंट्स, राइट. प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड. टारगेट कहाँ तक होल्ड करोगे? जहां तक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस चलो, वो भी अलोकेट करते हैं. 400 पॉइंट्स के बदले में तुम्हें कितना पॉइंट्स मिल रहा है? 1400 पॉइंट्स, विच इज इक्वलेंट टू 1:5 रेशियो, सॉरी 1:4 रेशियो. एंड एक्चुअली मैं वो गलत ही बोलूंगा, 1:4 नहीं है वो, राइट. क्योंकि इस पॉइंट ऑफ एक्शन में आपने दिया 400 की एसएल. यहाँ पे आपका जैसे ही 400 होता है, मार्केट आता है सीटीसी पे, राइट. यहाँ से यहाँ तक आपका 1:1 होगा. पोस्ट दैट, इस पॉइंट ऑफ एक्शन से इस पॉइंट ऑफ एक्शन से, इफ यू कैलकुलेट एंड गो, इट्स 1:10. कैलकुलेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज रॉन्ग एट फर्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, 1:4 ही मिल रहा है यार. This is how market tends to trap you guys down. Hope you guys understood. Hope you guys understood how does the market tends to work. One, two, three, four. Certainly, sir. रिटेलर्स पर्सपेक्टिव गोल्ड में समझाता हूँ, ध्यान से सुन लेना, ठीक है. एशियन सेशन में व्हाट इज द वन थिंग दे फॉलो? ओके चलो यार, स्मूथ मूवमेंट है. न्यूयॉर्क सेशन आते ही वो लोग बोलेंगे मार्केट वॉलेटाइल है, आई डोंट वांट टू रिस्क, राइट. डेफिनेटली मार्केट वॉलेटाइल है यार. एक एक कैंडल कितने पॉइंट्स के बन रहे हैं यहाँ पे? 16 पॉइंट्स, राइट. सम ऑफ द कैंडल्स आर ऑफ 8 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स. say me one thing, when you know inducement, when you know S1 and S2, when you know the mathematical concept, when you know the target,
when you know where to sit, will you think the market is volatile? No. You will follow the rules. You will wait in a patience full way. You will wait for your setup. Low. Setup 1 created, no doubt. Execution we can look at. One candle is of 12 points. I don't want to take that much of risk. Chalo, let's wait for an S2 creation of S2, S1 of inducement creation या S1 creation. Right? उसके हिसाब से partner 1, partner 2, partner 3 break. S1 create हुआ है, continuity में let's go. At this point of action, will you be able to be scared? No, you don't have to be scared at this point of action. Right? Execution point से आपका SL कितना है max to max? S1 point of action New York session के हिसाब से this is 4.192 points. Is it still in 40 pips range? Yes, it is in 40 pips range. You can execute that trade. You don't have to be scared. But let's look into the perspective of retailers' mindset here. Again, action number 1. FOMO create होता है by this one candle. Okay? Continuity में आई थी यहाँ पे market. Running candle execution. Account blown. Right? उसके बाद, oh my god, recovered. Let's look into the positions of long. 0.3 से market rejection ले रहा है, 0.5 से market rejection ले रहा है. Boom. SL hit. इतना कॉन्फिडेंसली कैसे बोल सकते हो SL 0.35 का रेंज है? चलो मैम, वो भी आपको दूर करते हैं. फिबोनाची एक्सटेंशन लगाते हैं. सॉरी, रिट्रेसमेंट. Where is market taking rejection from? First rejection from 0.3, second rejection from 0.5. Okay, third rejection from 0.6. रिटेलर्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से इस पॉइंट ऑफ एक्शन से मार्केट रिवर्स होती है. ओके, फिबोनाची लेवल्स लगाने का भी एक राइट पॉइंट ऑफ एक्शन होता है. उस पॉइंट ऑफ एक्शन में ये नंबर्स काम करते हैं, उससे पहले नहीं. ओके, सो ये पॉइंट ऑफ एक्शन हुआ. ओके, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चलो ब्रेक हुआ है, लिक्विडिटी ली है सब लोगों की, ग्रीन कैंडल क्रिएट हुई है, यहाँ से नेक्स्ट ऊपर जाएगा एग्जीक्यूशन. बट यहाँ पे मार्केट क्या फॉलो कर रहा है? मार्केट इज फॉलोइंग ओनली वन थिंग. डेफिनेटली देयर आर फ्यू पीपल्स हु विल बी वेटिंग, पेशेंसफुली वेट कर रहे होंगे. ओके, डायरेक्शन इज इक्वल टू मार्केट. मार्केट देखते रहेंगे, मार्केट देखते रहेंगे, चलो एग्जीक्यूट करते हैं. राइट? At point of actions, there are few people who execute the trades in discounted price. No doubt. For them, they have the option. Discounted price. Right? Discounted price is at 0.718. Yeah, 52. These are the two levels where you get a discounted price of a movement. If that person works on discounted range, definitely he will look for an execution. But the person who is looking at discounted range doesn't come at first place in 97% of the retailers. No? ओके, वो हुआ. यहाँ पे अगर नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है. ओके, इस सपोर्ट के साथ व्हाट डिड पीपल डू? रिजेक्शन दिखा, नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूटी में ग्रीन क्रिएट की थी यहाँ पे. ओके, चलो ग्रीन में बैठे. एसएल कहाँ पे रखा है? यहाँ पे ही, इसके नीचे. एंड कितने पॉइंट के एसएल रखे? एग्जीक्यूशन पॉइंट से 4 पॉइंट का एसएल रखा है. ठीक है, इस पर्सपेक्टिव में जैसे ही मार्केट ऊपर गया, थोड़े सेकंड के लिए खुश, जैसे ही रेड कैंडल क्लोज किया, पैनिक शुरू. राइट? सो इस पॉइंट ऑफ एक्शन में क्या करेंगे? ओके, चलो एक ग्रीन कैंडल आया और एक कैंडल को वेट करेंगे. राइट? फियर कहाँ पे बिल्ड हुई उनको?
फिर से ये रेड कैंडल में तो ऑलरेडी आधा पक चुका है उनका, राइट। नेक्स्ट ग्रीन कैंडल थोड़ा शांत, जैसे ही ये कैंडल ऊपर नहीं गया ना, फिर से डर बैठ जाएगा। उसका नेक्स्ट कैंडल जैसे ही रेड में क्लोज होती है, एग्जिट। देन व्हाट डिड द मार्केट डू? स्लो एंड स्टडीली फ्राइडे इवनिंग सेशन में क्लोजर यहाँ पे दिया था। विद दैट पर्सपेक्टिव आज के दिन में ऊपर जाके मार्केट नीचे के लिए आ रही है, राइट। So this is the plan of actions, how big players hunt you guys down, right? Understand where are the circulating supplies, where are the movements, where is the trend, where is the bending, where is the major inducement creations. ये सब आप 5 मिनट के अंदर कर सकते हो, बट वो 5 मिनट में आने के लिए यू हैव टू spend on back testing, you have to spend time on forward testing, you have to spend time on live understanding. Post that, small executions to understand the patterns, right? Post that you will understand, okay, fuck, this is a circulating supply, I made a mistake. Note down the mistake 4 times. If you're not repeating more than 4 times, think you have mastered that current movement. If you have moved it more than 4 times, think that you are not getting out of that one particular mistake, right? If you are repeating the same mistake for more than 4 times, take a break for at least 1 to 2 months, because your mind is trained in that way to execute the trades. Okay, यहाँ पे ही execute करो, retailers perspective में ही अटके रहो। उस chance of action में you will tend to lose your entire capital what you have in the account. That's the reason. Don't be in the hurry in making the money. Money can be made like this. चुटकी बजाने से पैसे बनेगा यहाँ पे, बट वो चुटकी बजाने से पैसा बनना है ना, वो पूछेगा क्या किए हो मार्केट में, तो चुटकी बजाने से पैसे देना है तुम्हें तो, राइट। वो पूछेगा दिखाओ मेरे को एक पॉइंट ऑफ एक्शन में एग्जीक्यूट करके दिखाओ। मार्केट खुद बोलेगा ओके चलो, तुम्हारा माइंड बोल रहा है यहाँ पे लॉन्ग करना है, राइट। मार्केट बोलेगा तू यही नहीं सीखा है कहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, ले, बूम, अकाउंट ब्लोन। सेकेंड टाइम रिकवरी स्ट्रेट, फिर से मार्केट बोलेगा चल, पहले वाला गलत हो चुका होगा, अभी सही है। सेकेंड में भी रॉन्ग माइंडसेट ऑफ अलोकेशन के साथ एग्जीक्यूट करोगे, बूम, जा, तो अभी तैयार नहीं है, राइट। जब तक तुम्हारा माइंड को समझ में आएगा कि दिस इज नॉट द वे ऑफ ट्रेडिंग, तब तक मार्केट खुद बोल देगा कि लाइक दिस इज नॉट फॉर यू। वंस यू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट फॉर यू, तब तक बहुत देरी हो चुकी होगी, उसके साथ बहुत कैपिटल उड़ चुका होगा, उसके साथ बहुत सारे कोर्सेस खरीदे होंगे, उसके साथ एक माइंडसेट में आ गया होगा कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब जुआ है, इधर पैसा बनता नहीं है। चलो अभी छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि 5 साल से आपने XYZ वैल्यूज दिए होंगे मार्केट को बिना सीखे, तो देन यू गो इन अ हंट कि लाइक कौन अलग कर रहा है मार्केट में। I had a genuine doubt. Please, can you show me the execution point example of which candle we have to enter, also after which confirmation for the ones you have small capital, show 4 to 5 examples, please. Definitely, I'll show you 4 to 5 examples. Yeah, 4 to 5 examples क्या है? तुम जो भी डेट बोलोगे उधर दिखाऊंगा मैं, दिखाओ, पूछो, बट 5 मिनट के बाद, आफ्टर 5 minutes. If you guys are liking the video, all the new members learning from the video, do hit a like, share, and subscribe. Okay.
एंड अभी भी क्लियर कट बोलता हूँ, दिस प्लेस इज नॉट फॉर द पीपल who wants tips. This place is not for a people who wants entry exits. This channel is purely on learning and execution. उससे ज्यादा इस स्ट्रीम से, इस चैनल से कुछ एक्सपेक्ट मत करना. यस, एक ही डाउट 1000 बार आ रहा है, पूछो बताएंगे. अगर एक भी बार आप बोलोगे कि एंट्री पॉइंट बताओ, एग्जिट पॉइंट बताओ, दिस इज नॉट ए चैनल फॉर यू, मैं बताऊंगा भी नहीं. राइट? कभी कभार आई ओनली प्रॉमिस आई विल गिव यू एंट्रीज, मैं देता भी हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देता हूँ, बट that is on a rare scenarios where the difficulties are more. Right? सीधा साधा मूवमेंट में अगर मैं देने लगी हूँ, then it's not according to the plan of actions. Okay? These are the clear rules of this channel. 1000 बार डाउट पूछो, सेम डाउट पूछो, मैं बताऊंगा. राइट? रोज 2 बार स्क्रीनिंग होती है, 2 बार भी स्टार्टिंग डेली कैंडल से लेके 15 मिनट तक आता है. उसमें भी डाउट आता है तो पूछ सकते हो. आई विल बी 100% explaining it to you without having a second thought. But only one thing keep in mind, guys. This channel is not meant for tips and giving you entry points and exit points. Right? Definitely, जो मैं allocation डाल रहा हूँ उसमें ही आपको है सब कुछ. Right? अगर मैं allocation point यहाँ पे डाला हूँ, swing high, swing low, you know where exactly the market is going till where. उसमें भी आप मेरे को एंट्री एग्जिट पूछ रहे हो, देन यू गाइस आर जस्ट बिहाइंड द मनी, यू गाइस आर नॉट बिहाइंड द लर्निंग. राइट? सो जस्ट मेक श्योर ऑन दैट पर्सपेक्टिव. सीखना है, डेफिनेटली दिस इज द प्लेस. जो आज तक आप यूट्यूब में नहीं देखे हो ना, वैसे सब सिखा दूंगा यार. जो जो नहीं देखे वो सब यूट्यूब में सिखाऊंगा, बट स्टेप बाय स्टेप. राइट? वो बोलते हैं ना, first 2 months is the difficult months because you are just understanding the basic. Once you understand the basic, then Excel क्या, then 1:10 का hunting क्या, then insider liquidity क्या, सब आएगा आप लोगों को, सब. Just the first 2 months of identifying the right inducement levels, back testing, forward testing is what I want from you guys. Right? Post that, it's just एक वीडियो एक्सप्लेनेशन काफी है आपको आइडेंटिफाई करने में. ओके, दिस इज a circulating supply. Okay, this is a Excel theory. Right? This is a hunt. राइट? ये सब आप इमीडिएटली समझोगे, बस फर्स्ट 2 महीना अंडरस्टैंडिंग द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन द डायरेक्शंस ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड, इन द डायरेक्शंस ऑफ एन इंड्यूसमेंट एंट्री पॉइंट्स. ये 3 चीज मेरे को 2 महीने में माहिर करके दिखाओ. दूसरा जितना भी सीक्रेट्स है मार्केट का, मैं वो सब एक एक दिन में एक एक सिखाते जाऊंगा. एक ही रिक्वेस्ट है, ये कंप्लीट होने तक कुछ भी मत पूछो. Okay, guys. I had a genuine doubt. हो गया, एग्जाम्पल प्लीज हो गया. सर किसी भी डेट के बता ना, मतलब इंड्यूसमेंट क्रिएट हो गया, ब्रेक दे दिया, अब जो नेक्स्ट कैंडल है उसमें कैसे एग्जीक्यूट करना है. ऑल्सो शो 2 to 3 एग्जाम्पल्स जब इंड्यूसमेंट क्रिएट होगा, या एनी कंफर्मेशन.
आ गया है बट ब्रेक नहीं हुआ है, सो वी हैव टू अवॉइड द ट्रेड. हाँ, डेफिनेटली अविरल, वो सब सिखाऊंगा. गिव मी सम टाइम. मेरा लेवल्स कहाँ गया? यस. 5 मिनट अविरल, आई विल हेल्प यू आउट. गिव मी सम टाइम. एंड अगर जो भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे हमने डिमांड ड्रॉ किया है. जनाब, ये डिमांड नहीं है हमारा, ये हमारा इनसाइडर लिक्विडिटी है. ओके, 1 2 3 4. So please don't get confused. That's not the demand, that's the insider liquidity. All the new members, welcome to the stream. जो भी डाउट से पूछ सकते हो. If you're learning from the stream, if you're getting educated through it, do hit a like, share, and subscribe. Right? So let's start with S2 scenarios, क्योंकि BTC का चार्ट है. S2 scenarios कैसे आइडेंटिफाई करना है? अविरल, फर्स्ट, जिस भी एरिया में विक क्रिएट हो, राइट, उसका नेक्स्ट कैंडल क्लोजर में कंटिन्यूटी में जा रहा हो, थर्ड कैंडल विक क्रिएशन के साथ एग्जीक्यूशन होगा टिल द मैथमेटिकल नंबर. ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है S2 का. सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, उस पॉइंट ऑफ एक्शन में मार्केट क्लोज किया हो, वहां पे इनसाइडर कैंडल क्रिएट करके 2 3 वहीं पे 15 मिनट का खेला हो, ब्रेक होती है, मार्केट कंटिन्यू करेगी सेम डायरेक्शंस. Okay, let's identify the examples in the same pattern way. This is S2 at the current state. Okay, scenario 1, मार्केट मैथमेटिकल नंबर पे आया, इनसाइड कैंडल क्रिएट की, ब्रेक दिया, थर्ड कैंडल रिजेक्शन के साथ एग्जीक्यूशन.
यहाँ पे कर सकते हो, कैपिटल ज्यादा है, सेकेंड कैंडल में ही एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। होल्ड कहाँ तक करोगे? फर्स्ट टिल द प्रीवियस डिमांड, सेकेंड टिल द मैथमेटिकल नंबर, सेकेंड सिनेरियो। Okay, second scenario, what you will be looking over here at the current stage. राइट, यहाँ पे सिनेरियो वन बिल्ड हुआ है बुलिश का, इस टू में मार्केट विक के साथ क्रिएट किया, सेकेंड कैंडल कंटिन्यूटी में क्लोज, थर्ड कैंडल रिजेक्शन के साथ एंट्री, टारगेट होल्डिंग विल बी टिल द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ओके, so this is S1 S2, same scenarios will look in different categories. Right, at this point of action, what is the next thing that we'll be looking at? The next things we'll be looking at is in the counter movement, right? Counter movement मतलब मैथमेटिकल नंबर क्लोज हुआ, इनसाइडर कैंडल बिल्ड हुई, यहाँ पे भी अगर नोटिस कर रहे हो 1 2, थर्ड कैंडल रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी पे आया था, राइट, बट मार्केट टेंड टू क्लोज बैक अगेन, बट एग्जीक्यूशन पॉइंट के हिसाब से 40 पिप्स, व्हाट इज द टाइमलाइन 17 है, तो यहाँ पे 40 पॉइंट्स का एसएल रहेगा जो कि 400 इन बीटीसी। At this point of action also market followed the rule and continued, right? एक ही चीज याद रखना है, जहां पे बड़ा विक आ रहा है वहां पे क्लोजर ऑफ कैंडल दिखने दो, सेकेंड कैंडल क्लोज हुआ, राइट, थर्ड कैंडल ब्रेक, execution in the fourth candle on a very big wicks like this, जहां पे 1000 पॉइंट्स प्लस विक्स पे है, right, then wait for the second candle in the closure, third candle in the direction, fourth candle with the rejection execution. Okay, that is the perspective. Some point of action, let's come into inducement ranges now. Okay, inducement range में अगर notice करोगे यहाँ पे, what is the plan of action that market has built? Partner 1, partner 2, partner 3, partner 4, break, rejection, continuity, right? How many points of the movement this is? This is of 400 points. Execution यहाँ पे हुआ है, तो SL आपका कितना होगा 1230 टाइम फ्रेम इंडियन के? 400 points. 400 points is here. What did the market do? Continued in the direction till the mathematical number, right? So that's how you look into the circumstances and execute the trades. जब तक third confirmation नहीं build होती है, 1 2 third continuity, right? Market यहाँ पे trap कर रहा है, मतलब उसको उतना लिक्विडिटी नहीं मिला है जितना एक शॉट में जा सके, so you have to wait in that prospective points. Okay, clear, Aviral?
90 points running, 900. Okay, sir. 1000 points running. Okay, sir. Bombard. Bombard का मतलब क्या है? Lovely explanation. Okay. Okay, my lord. Hey, very good morning, Rachit. Sorry, message नहीं देखा, अभी देख रहा हूँ. How are you doing? The stream will be there for next 15 minutes. जो भी doubt है पूछ लेना. Almost TP2 hit. रिंकू अगर स्क्रीन पे हो अनिरुद्ध. So did it follow the inducement and did it give the target? One doubt है सर BTC में, पूछो ना. No hesitations at all. Please ask. One moment, sir.
Bank Nifty targeted intermediate ratio ka next plan of actions will be looking for the next regiment ratio over here. Regiment ratio allocate करना है तो regiment ratio allocate करो, else we will look into the second round of prospectives in the intermediate ones. Okay, so target hit हो चुका है, hence I am changing the plot. Plot 1, plot 2, plot 3. Let's look into the new numbers of the Bank Nifty at the current stage. On the break, on the continuity only, these numbers will be followed. So the swing high is currently at 48430. Swing low is at 48203.75. Formulative number आके 226.25 है. Post that, what is the retracement value? 48296.90. 48296.90 plus 226.25 into golden ratio, which is 1.618. So what is the value that we'll be looking over here at the current stages? 48,662. 48,662.97 as my new ratio point. Okay, on the break and continuity, that will be the next holding point of the trade. BTC में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में त्रिशूल बन रहा था. टाइमिंग BTC में त्रिशूल बन रहा था 15 मिनट. त्रिशूल 1 घंटे में देखना है ना जनाब. ओके, आपके हिसाब से देख लेते हैं. इंडियन 1 टीम. टाइम, डेट क्या है? 84,336.59 से 82,395. यही होगा. नहीं, ये नहीं है सर. पर मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला डाला था बेरिश मोमेंट के लिए, लेकिन उसका मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाया. प्लीज एक्सप्लेन सर. कंफ्यूज्ड हो रहा है थोड़ा. डेट बता दो, कौन सा डेट का है? 13th मतलब ये 15th का देख रहे होंगे. 83, 82 ये भी नहीं है. हाँ, मैं ट्राई किया था 15 मिनट्स में, होता है या नहीं होता. डेट तो बता दो जनाब. संडे, कल के दिन का. कल के दिन में आप कहाँ पे डाले हो? पीओआई रेंज में डाले हो. 13, 13. ओके, यहाँ पे त्रिशूल बनाए कहाँ है जनाब? 15 मिनट में बीटीसी में 16 मार्च संडे का. ये गलत है ना. 1 घंटे में आओ, 1 घंटे में त्रिशूल कहाँ पे बना है? तुम 16th को देख रहे हो.
त्रिशूल तो हमें 14th के दिन मिला है। 14th के बाद हमें नेक्स्ट त्रिशूल मिला है 15th 8:30 को, उसके बाद 16th 9:30 को। त्रिशूल्स आर ऑलवेज आइडेंटिफाइड इन 1 आवर। 15 मिनट्स में जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था ना, यहाँ पे आपको इंड्यूसमेंट फॉलो करना था, राइट? इंड्यूसमेंट कैसे फॉलो करते हैं यहाँ पे? पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3, ब्रेक, रिजेक्शन, कंटिन्यूटी। टारगेट अलोकेशन कैसे होती है यहाँ पे? आपका TP1 के लिए स्विंग हाई ये होता, स्विंग लो ये होती, रिट्रेसमेंट पॉइंट ये होता, राइट? इस पॉइंट ऑफ एक्शन में भी अगर आप देखते, पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3 ब्रेक, रिजेक्शन, कंटिन्यूटी में मार्केट नीचे आया, करेक्ट? मैथमेटिकल नंबर यहाँ पे डालने के लिए आपके पास ना स्विंग हाई था ना स्विंग लो थी, राइट? तो इस पॉइंट ऑफ एक्शन में जो 1 आवर का सरप्लस चलता है वो सरप्लस पॉइंट ऑफ एक्शन अलोकेट करते हैं, राइट? जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये सर्कल डाला है, कम टू 1 आवर, वेयर इज माय सर्कल? दिस इज माय सर्कल पॉइंट, राइट? फॉर दैट व्हाट इज द मेजर एग्जीक्यूशन पॉइंट? ओके, मार्केट एक जोन में है पूरा, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ एक्शन टू दिस पॉइंट ऑफ एक्शन, राइट? फर्स्ट कंफर्मेशन आपको मिला है, स्विंग हाई आपके पास है, स्विंग लो आपके पास है, रिट्रेसमेंट पॉइंट 1 आवर का यहाँ पे है, राइट? ये जो टारगेट होगा दैट विल बी ऑलवेज योर फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन, राइट? सो इस हिसाब से लेट्स अलोकेट द टारगेट पॉइंट्स, ओके? तो ये हमारा स्विंग हाई हुआ, ये हमारा स्विंग लो हुआ, इस पॉइंट ऑफ एक्शन में, उसके साथ ये हमारा रिट्रेसमेंट पॉइंट, ओके? लेट्स डू द math over here. So as per the math, what is the first number that we have got? 85 to 92.81 minus 83,935.23, ओके? फॉर्मुलेटिव नंबर आके 1357.58 निकलती है, रिट्रेसमेंट पॉइंट क्या है? 84,923.81, डायरेक्शन बेरिश है, सब्ट्रैक्ट करो फॉर्मुलेटिव नंबर के साथ 1357.58. What is your golden ratio target that you will be getting? The golden ratio target you are getting is 82,727. 82,727. 82,727. ओके, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ एक्शन में आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट था, यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। अगर वो इतना जबरदस्त ब्रेक होके आपको कंफ्यूज कर दिया मार्केट, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल बी लुकिंग फॉर? 82,200, that is our intermediate level. मार्केट कहाँ से रिजेक्शन लिया? सेम पॉइंट ऑफ एक्शन से ना? सो दैट्स हाउ यू लुक इनटू द सर्कमस्टांसेस इन 1 आवर। जब 15 मिनट में आपको हाई लो डालने के लिए पॉइंट ऑफ एक्शन ही नहीं है, तो 1 आवर का जो प्रीवियस हाई होगा उस पॉइंट ऑफ एक्शन से, दैट विल बी योर मेजर अलोकेशन पॉइंट, ओके मिस्टर रचित पाटिल? All the new members, कोई भी डाउट है प्लीज डू आस्क, लास्ट 5 मिनट्स इन द स्ट्रीम, वीडियो में सीख रहे हो, if you guys are getting educated through it, do hit a like, share and subscribe.
अगर समर स्ट्रीम पे है तो अभी उसको लगाना था, क्योंकि उसका फर्स्ट डाउट वही था ना, ब्रेक होने के बाद लगाना है या नहीं। अभी इस पॉइंट ऑफ एक्शन में रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी जब होती है तब ही विल अलोकेट द नेक्स्ट प्राइस एक्शन पॉइंट, उससे पहले नहीं। क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई जो आज के दिन का है वो ले चुका है मार्केट। नीलेश, लिया कि नहीं लिया आज का जो सर्कुलेटिंग सप्लाई एक्सेल जो क्रिएट हुआ था, वाज दैट एक्सेल 100? थैंक्स सर। मैंने बस ट्राई करा लिया, अप्लाई होता है नहीं होता है 15 मिनट्स। वो ट्राई करने के चक्कर में आप कंफ्यूज कर लिए ना। That's it. Yes sir, it took. हाँ, hit the like button guys. Keep back testing. कोई भी डाउट आता है नोट डाउन करना, इवनिंग सेशन में पूछ लेना। But one thing, when we look at taking circulating supply, how do we analyze till where it can go? As here in this case, there is one supply which is missed. Which one? Time batao. Which supply is it missed? All the new members, कोई भी doubt है पूछना, and welcome to the stream and the family.
नीलेश कौन सा टाइम का बता देना एक सेकेंड. As it should have gone till 82,500. 82,500 for collecting all the supplies, right? Or something else. नहीं 82,500 तक क्यों जाएगा? जो हमारा previous demand है and supply, circulating supply में क्या होता है? What is the first thing that you guys notice? Hmm? What is the first thing that you guys will notice? ये जो कैंडल है ना, दिस इज नॉट सर्कुलेटिंग सप्लाई कैंडल. सर्कुलेटिंग सप्लाई कैंडल यहां से शुरू हुआ. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, राइट. ये तो मूवमेंट में गया ना, ये पूरा मूवमेंट में गया. इफ यू कंसीडर दिस एज अ सर्कुलेटिंग सप्लाई देन यू विल गेट ट्रैप्ड. सर 1 आवर में त्रिशूल है. यस डेफिनेटली त्रिशूल ही है. 7 मिनट में अगर कैंडल क्लोज करती है, हल्का सा रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी करती है, स्विंग हाई चेंज करो, स्विंग लो चेंज करो, दैट विल बी योर नेक्स्ट टारगेट. 1 आवर का वेट क्या करना है, इधर ही खत्म हो गया ना. रिजेक्शन फर्स्ट कैंडल, S1 सिनेरियो क्रिएट हो रहा है S2 का, राइट. फर्स्ट कैंडल रिजेक्शन हुआ. थोड़े देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था समर्थ को. उसके बाद नेक्स्ट कैंडल कंप्लीशन पे चल रही है, थोड़ा सेफ खेलना है. नेक्स्ट कैंडल रिजेक्शन लेके जैसे ही कंटिन्यू करेगा देख लेना. Why we are not considering it as circulating supply? Because it didn't make lower low. No, it's not about making lower low. What is circulating supply? Circulating supply is a supply where there is a high transactions of buying and selling. यहाँ पे सिर्फ बाइंग हो रही है ना, बाइंग 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 बाइंग. सर्कुलेटिंग सप्लाई एक्सेल कहाँ पे बिल्ड होता है? जहाँ पे पैरेलल चैनल आता हो. क्या इस पॉइंट ऑफ एक्शन से इस पॉइंट ऑफ एक्शन में पैरेलल चैनल लगा सकते हो? नहीं ना. बट इफ वी कंसिडर रिटेलर्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से इस पॉइंट ऑफ एक्शन से इस पॉइंट ऑफ एक्शन तक, डू वी हैव ए पैरेलल पैनल, सॉरी पैरेलल बोल रहा हूँ, चैनल, पैरेलल चैनल. हाँ. So when there is a parallel channel creation, that's when the market tends to hunt and create a eggshell. That is what 1 is to 10 called as, right? 1 is to 10 eggshell theory. Okay. For an example, kitna point of movement hai? Let's look into that. This is the plan of action point. From this point of action to this point of action, what is the movement that we have got? 1098. In 1098, what is the SL range that we are holding? 200 points, which is 20 pips as per the Asian session. What did the market do at the current stage? It took the circulating supply of 1 is to 10, right? So that is eggshell theory. जहाँ पे retailers parallel channel लगा के बैठते हैं, that is the point of action where the market tends to hunt them out, like चुटकी में, right? जिनको भी live में चाहिए था, with the explanation, market has going in the directions post the completion of demand. फर्स्ट अलोकेशन हमने यहाँ पे इनसाइडर लिक्विडिटी अलोकेट किया था. इस इनसाइडर लिक्विडिटी के साथ मूवमेंट गॉट क्रिएटेड, बेंड हुई थी हल्का सा. हमारा फर्स्ट सप्लाई पॉइंट ऑफ एक्शन जो ये यहाँ पे थी, वो मूवमेंट यहाँ पे अलोकेट हुआ. पोस्ट अलोकेशन कंप्लीशन, व्हाट डिड मार्केट टेंड टू डू? Market created a S2 S1 scenario, wick creation, closure, next candle closure, continuity में execution. Okay, got it. Thank you.
इवनिंग सेशन में। तब तक के लिए कीप बैक टेस्टिंग। तुम्हारा नंबर कैसे आ रहा है? 82 835। क्या 82 835? नंबर इधर है, देख लो। दिस शुड बी द नंबर्स यू शुड गेट। ओके, एंड ऑल द न्यू मेंबर्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जो भी डाउट है नोट करना, इवनिंग सेशन में पूछ लेना। If you guys are learning, if you guys are implementing, if you guys are back testing and forward testing on what is being taught, then do hit a like, share and subscribe. Sir, new low and high से जो आपने बोला, that is when confirmation. We have got only one round of confirmation. ये क्लोजर ग्रीन कैंडल में होना है। नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूटी में जब आएगी, स्विंग लो ये होगा, स्विंग हाई ये होगी, रिट्रेसमेंट पॉइंट ये होगा, राइट? Your S1 and S2 will get subtracted. Post subtraction, you will get a formulative value. Post the formulative value, retracement point plus the formulative value into the golden ratio 1.618 will be your next target. On the threshold creation, with the threshold creation with this formula, that will be your next target allocation. Okay, Viral? So always remember one thing: trade fearlessly with following the risk management. With that, allocate the trades in the directions of math. Emotional less trading करना, मतलब जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी हो जाना is not the quality of the traders. Have some patience. This market gives you money when you can sit idly following the discipline and being consistent, not else following the greed or the FOMO. The market will tend to take the money from you, not giving money to you. Okay? So make sure you don't trade FOMO, you don't take trades in running, and follow the rules, be in the directions of mathematical concepts, and hold the trade till the numbers, what's being projected onto the screen. मिलते हैं शाम पे, तब तक के लिए take care. Bye bye. Nitesh signing off.